Hello everyone. Today we'll see some more question from articles of constitution, which is from state PSC examinations such as UPPCS, Bihar PCS, MPPCS, whatever. Okay, I have already mentioned many times. So we're dealing last 30 questions. Okay, so let's see today's questions. Okay, so here we can see there is two lists: list 1, list 2. List 1 part 9 of Indian Constitution, part 8 of Indian Constitution, part 4A of Indian Constitution, part 9A of Indian Constitution. Okay, so these are related to union territories, municipalities, panchayats, fundamental duties. Okay, so we have to match with these things. Okay, so see part 9. Okay, if you remember, part 9 of Indian Constitution deals with the panchayats. Okay, deals with the panchayat. Coming to part 8, okay, which deals with the union territories. Okay, coming to part 4A, which deals with the fundamental duties. Okay, and rest is part 9A is municipalities. Okay, so if you match with this, you'll get answer A. Okay, so you can see here the same thing is that we have match. Okay, next, which of the following is not correctly matched under the Constitution of India? ठीक है, जो मैच नहीं कर रहा वो हमें बताना है. पंचायत पार्ट 9, म्यूनिसिपैलिटीज पार्ट 9A, कोऑपरेटिव सोसाइटीज पार्ट 9B, ट्रिब्यूनल्स पार्ट 10. ओके, सो कौन सा मैच नहीं हो रहा है? सो इफ यू रिमेंबर द प्रीवियस क्वेश्चन, यू कैन two option you can easily eliminate here. So it is actually panchayat part 9, yes, municipalities part 9A, and cooperative society is also correct. This is wrong. Tribunals is not part 10, it is actually part 14A. Okay, so that's why answer is D. See, you might hear some of the music voice in this video because adjacent to my room one person is playing music, so with that I don't have control. Okay, so while I'm recording this, the guy is listening music, so if you're hearing, don't irritate with that, just forget. Okay, so yeah, so you can see here, so tribunals is nothing but it's part 14A, so the answer is D. They are asking not correct. Okay, yeah, next question again, yeah, match list, fundamental rights, fundamental duties, the union, emergency provision. Okay, again they are asking the part A of Constitution of India, part 3, part 18, part 5. Okay, so we'll see. देखिए, जो हमारा fundamental right है, it is part 3, that we know that. Okay, so if you see this, so 2 means 2 option you can eliminate. B can be eliminated, D can be eliminated. ठीक है, बचा 2, उसी से हमें करना है. अब देखिए B इसमें मैच हो रहा है. I mean, जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज वो पार्ट 4A हो जाएगा, ये हमें पता है. ओके, अब इन दोनों से हमें निकालना है. सो इमरजेंसी प्रोविजन डेफिनेटली इट विल कम इन द लेटर पार्ट्स. ओके, बाद में अगर आप इवन थोड़ा बहुत भी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता है, 352 ऐसे आता है. ठीक है, तो 352 बाद में ही आएगा. सो दिस विल बी पार्ट 18 सॉरी. ओके, सो इसमें कितना हो जाएगा, 3rd, एंड बचा हुआ हमारा यूनियन, इट इज पार्ट 5. सो विद दिस आंसर विल बी A. ठीक है, अब इसमें आप उस तरीके से भी अरेंज कर सकते हो. आपको अगर नहीं भी पता है,
हाँ ठीक, इतना बस पता है कि यूनियन शुरू में आता है, फंडामेंटल राइट शुरू में आता है, इमरजेंसी प्रोविजन बाद में आता है। ओके, सो बाद में आता है तो उसके पार्ट भी बाद में होंगे, तो उस हिसाब से इवन दो इफ यू डोंट नो, एक या दो भी पता है तो आप आराम से इसका आंसर कर सकते थे। ठीक है, you can read this, the same thing is written what is given in the question. Okay, so fine, next question we'll see. Again, not correct, not correctly match fundamental duties, part 4a, the state, part 6, Attorney General of India, part 13, service under the union and state, part 14. Okay, so again not correctly match. अब इसमें देखिए जो हमारा अटॉर्नी जनरल है, जनरल ऑफ इंडिया, पार्ट 13 नहीं होता है, so this is the correct answer because they are asking not correct. ये हमारा होता है पार्ट 5। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज करेक्ट है, द स्टेट ये भी करेक्ट है, पार्ट 6 एंड सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट ये भी हमारा पार्ट 14 करेक्ट है। जो हमारा अटॉर्नी जनरल होता है, इट इज आर्टिकल 76 which is part 5. So the answer is C. Okay, 95, list 1, list 2. I think फिर से आप आराम से इसको कर सकते हो, whatever question we have done in the earlier, based on that we can answer this question. So part 15, part 16, part 17, part 18 सीधा सीधा पूछ लिया। ओके, इमरजेंसी प्रोविजन, ऑफिशियल लैंग्वेज, स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग सर्टेन क्लासेस, इलेक्शंस। ठीक है, अब देखिए इसमें पार्ट 15 इज इलेक्शन, 4 होगा, पार्ट 15 इट इज स्पेशल प्रोविजन, पार्ट 17 दैट इज ऑफिशियल लैंग्वेज, एंड बचा हमारा पार्ट 18, इससे पहले हम लोग देख चुके हैं इमरजेंसी प्रोविजन। ओके, सो इफ यू मैच विद दिस यू विल गेट आंसर बी। ओके, सो पार्ट 15th इलेक्शन, पार्ट 16th स्पेशल प्रोविजन इन रिलेशन टू सर्टेन क्लासेस, पार्ट 17 ऑफिशियल लैंग्वेज, एंड पार्ट 18th इज इमरजेंसी प्रोविजन। ओके, सो द आंसर इज बी। Yeah, which of the following is correct about the heading of article 162 of the Constitution of India? सीधा पूछ ले कि आर्टिकल 162 होता क्या है। ओके, इसी वजह से मैं एक और प्लेलिस्ट करवा रहा हूं जहां पे जस्ट what is given in the article. Okay, I have directly taken from the Indian Constitution PDF itself. So आर्टिकल एंड इट्स टाइटल और जो भी उसमें दिया हुआ है। ठीक है, कुछ कुछ के वीडियो थोड़े से बड़े हैं बट हमें पूरा नहीं देखना, हमें बस ये देखना कि आर्टिकल और उसमें होता क्या है बस। ठीक है, उतने से ये टाइप वाले क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, यूपीएससी में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्टली पूछ लेगा कि इवन डायरेक्ट है, डायरेक्ट फॉर्म में पूछ लेगा कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस आर्टिकल, या इस आर्टिकल में क्या दिया हुआ है। So executive power of India, power of state, condition of governor office, terms of office of governor, extension of executive power of state. Okay, so article 162. So इसमें जो हमारा article 162 होता है, it is extension of executive power of state. ठीक है, आंसर टी। पढ़ लेते हैं यहाँ पे, आर्टिकल 162 हैज प्रोविजन रिगार्डिंग द एक्सटेंशन ऑफ एक्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट. इट स्टेट दैट सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन द एक्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल एक्सटेंड to matters with respect to which the legislature of the state has the power to make laws, provided that in any matter with respect to which legislature of state and parliament have the power to make law. मतलब जो हमारा स्टेट लेजिस्लेचर होता है उनके पास लेजिस्लेटिव पावर होता है, असेंबली होती है, वहां पे वो लॉ बना के जो उनका एक्जीक्यूटिव पावर है उसको
एक्सटेंशन कर सकते हैं। एक्सटेंशन मतलब आई विल नॉट से बढ़ाना, मतलब उनका टर्म नहीं बढ़ाना, बट जैसे दे कैन मेक ओन सेल्फ मोर पावरफुल बेस्ड ऑन द लिस्ट जो हमारा दिया हुआ है, स्टेट लिस्ट। तो अब वहां उसमें उसके हिसाब से वो लॉ ला के और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। तो मीनिंग इज दैट द पावर ऑफ जो हमारा गवर्नमेंट का जो पावर होता है उसको बढ़ा सकते हैं, ओके। बट फॉर इन केस ऑफ स्टेट लेवल, ओके, that will be applicable in the state only, okay, like if it is for UP then that power will be applicable in the UP itself, वो बिहार में या फिर अदर स्टेट में नहीं जाएगा, ठीक है। so that can be done by the state legislature, okay। so the extension of executive power of a state, which is article 162.